नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएम टीवी के बुलेटिन में। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। बिहार में 42 नगर पालिका के उपचुनाव, देश में पहली बार ई वोटिंग से मतदान। गुजरात के कई शहरों में मॉनसून का असर, राज्य के 11 जिलों में रेड अलर्ट। वडोदरा के गोत्री अस्पताल में बढ़ी सुविधा, एसएसजी के बाद अब जीमस में पोस्टमार्टम रूम। देश भर में ईवीएम और बैलेट पेपर के बीच चुनाव करने पर घमासान चल रहा है। वहीं बिहार में पहली बार मोबाइल से वोटिंग हो रही है। बिहार के 26 जिलों की 42 नगर पालिकाओं के उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें 6 नगर पालिकाओं में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ई वोटिंग हो रही है। ये प्रोजेक्ट वोटिंग सेंटर्स तक पहुंचने में असमर्थ लोगों को आसानी से वोटिंग कराने के लिए किया गया है। वोटिंग के लिए 2 ऐप लॉन्च किए गए हैं और ये सुविधा लेने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना था। चुनाव आयोग के अनुसार ई वोटिंग के लिए 50,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक ई वोटिंग हुई। दुबई, कतर जैसे देशों में रह रहे प्रवासी बिहारियों ने भी ऐप के जरिए वोटिंग की। मोतिहारी की विभा ने ऐप से पहला वोट डाला, जिससे वो देश की पहली ई वोटर बन गई है। गुजरात में मॉनसून ने इस बार जोरदार दस्तक दी है, जिसका असर पूरे राज्य में देखा जा रहा है। 16 जून को राज्य में हुई मॉनसून की एंट्री के बाद से मॉनसून ने पूरे प्रदेश को कवर कर लिया है। आज कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के 11 जिलों वडोदरा, पंचमहल, भुज, नर्मदा, अहमदाबाद, आनंद, सुरेंद्रनगर, मोरबी, देवभूमि, द्वारका, कच्छ और भावनगर में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कच्छ जिले के भुज में मौसम विभाग के अलर्ट के बीच आज भारी बारिश हुई। बारिश जहां लोगों को गर्मी से राहत देने वाली साबित हुई, वहीं दूसरी ओर इससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश के चलते भुज की सड़कों पर पानी भर गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। खासकर भुज बस स्टेशन के पास पानी जमा होने से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बड़ौदा शहर के गोत्री जीमस अस्पताल में पोस्टमार्टम विभाग को लेकर एक अहम निर्णय लिया गया है। अब गोत्री के जीमस अस्पताल में एक नया पोस्टमार्टम रूम शुरू किया जाएगा, जिससे शहर के 8 पुलिस थानों को जोड़ा गया है। इसके तहत नागरिकों को एक ही जगह पर सरल और तेज प्रक्रिया में पोस्टमार्टम से संबंधित सेवाएं मिल सकेंगी। गोत्री जीमस अस्पताल में नया पोस्टमार्टम रूम जल्द शुरू किया जाएगा। इसके लिए अब तक वडोदरा के 8 पुलिस स्टेशनों को जोड़ने का निर्णय लिया गया है, जिनमें शामिल है गोत्री, गोरवा, लक्ष्मीपुरा, जेपी रोड, अतलादरा, अकोटा, सयाजीगंज और फतेहगंज पुलिस स्टेशन। અને રજૂઆતને ધ્યાનમાં લઈ અમારા આરોગ્ય કમિશનર શ્રી, એસીએસ સાહેબ શ્રી તેમજ અમારા સીઓ સાહેબ શ્રી, અમારા સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ શ્રી, ડીન શ્રી તેમજ અમારા પૂર્વ હેડ ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટ ડૉક્ટર વિજય શાહ સર તેમજ જે ધારાસભ્યશ્રી અને જે લોકોએ રજૂઆત કરી હતી કે ગોત્રી મેડિકલ કોલેજમાં પણ પોસ્ટમોર્ટમ રૂમ તૈયાર થાય અને પોસ્ટમોર્ટમની પરમિશન મળે, તો એ માંગ જે સ્વીકારી છે અને આજે એકલું ગોત્રી જીએમઈઆરએસ નહીં પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતની જે પણ જીએમઈઆરએસ મેડિકલ કોલેજ સંચાલિત જે હોસ્પિટલો છે તેમને જે પોસ્ટમોર્ટમની પરમિશન આપી છે એ બહુ જ સારું અને સેવાકીય કાર્ય થયું છે, જેના લીધે જે એસએસજી હોસ્પિટલનું જે ભારણ હતું એ ઓછું થશે, પોસ્ટમોર્ટમ જલ્દી થશે, જે લોકોને જે આ દુઃખદ ઘટના ઘટી છે એ લોકોને જલ્દી બોડી મળશે। સાથે સાથે આપણે કોલ્ડ સ્ટોરેજની પણ વ્યવસ્થા કરેલી છે, એટલે કોલ્ડ સ્ટોરેજ આપણા બરોડામાં હાલ એસએસજી હોસ્પિટલમાં 36 બોડી મુકાય એવા કોલ્ડ સ્ટોરેજ છે, આપણી જોડે 20 બોડી મુકાય એવા કોલ્ડ સ્ટોરેજ છે અને આવનારા સમયમાં સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ શ્રી અને ડીનશ્રી દ્વારા જે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે એનાથી કદાચ આપણે પણ 30 બોડી રખાય એવું કોલ્ડ સ્ટોરેજ ઉપલબ્ધ કરાઈશું। FICCIFLO वडोदरा ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।
वडोदरा के सीआईएसएफ कैंप परिसर में आयोजित इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में एफआईसीसीआई एफएलओ वडोदरा की महिला विंग की टीम ने सीआईएसएफ अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मिलकर कुल 1200 पौधों को लगाया। यह आयोजन एफएलओ रूट्स ऑफ चेंज पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय सुरक्षा, जैव विविधता का संरक्षण और सामुदायिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना है। एफएलओ महिला विंग की अध्यक्षता शिवानी पटेल के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान में ग्रो बिलियन संस्था भी शामिल रही। लगाए गए पौधे विशेष रूप से ऐसे देशी प्रजातियों के थे जो कम पानी में पनपते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं और स्थानीय जैव विविधता को बढ़ाते हैं। આજે ફિક્કી વડોદરાએ એનું પહેલું વૃક્ષારોપણનું સિરીઝ ચાલુ કર્યું. અમારું ઇનિશિયેટિવનું નામ છે ફ્લો રૂટ્સ ઓફ ચેન્જ અને એમાં અમે આજે CISF કોલોનીમાં 1200 ટ્રીઝનું પ્લાન્ટેશન કર્યું છે. અમારા 60 મેમ્બર્સ આવ્યા છે, CISF પર્સનલ હતા અને એમના ચીફ ગેસ્ટ સાથે અમે 1200 ટ્રીનું પ્લાન્ટેશન કર્યું છે અને 3 યર્સ પ્રોમિસ આપ્યું છે. 3 યર્સ વી પ્રોમિસ ટુ ટેક કેર ઓફ ધ ટ્રીઝ કે ઝાડનું બરાબર ઝાડખાડ થાય અને ઝાડ બરાબર રહે અને એન્વાયરમેન્ટ સારું થાય. સો આજે અમારું ફર્સ્ટ ઇનિશિયેટિવ છે 1200. આગળ જઈને અમે મિયાવાકી ફોરેસ્ટ પણ કરવાના છે અને બીજી બધી જગ્યાએ પણ જઈને ટ્રી પ્લાન્ટેશન રેલવેઝમાં ને બધામાં જઈને કરવાના છે. અને ફિક્કી ફ્લો દ્વારા બીજા કયા કયા સામાજિક કાર્યો કરવામાં આવે છે? સો અમે વિકસિત ભારતની નીચે અમે સ્ટેમને લીધું છે, જેમાં 6 થી 9 ધોરણની છોકરીઓને અમે લોકો સ્ટેમ માટે સેન્સિટાઇઝ કરીએ છીએ, કેમ સ્ટેમમાં જાઓ અને પછી અમે જે લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ અને લોકોને એડવાન્સ સ્ટેમ ઇન ટર્મ્સ ઓફ રોબોટિક્સ, એઆઈનું એક્સપિરિયન્સ આપીએ છીએ અને અમુક સ્કૂલમાં અંડર અટલ ટિંકરિંગ લેબ અમે લેબ્સ પણ બનાવી આપવાના છે. અમે બહુ બધું હેલ્થમાં કરીએ છીએ ઇન એસોસિએશન વિથ ઝાયડસ હોસ્પિટલ્સ અબાઉટ બ્રેસ્ટ કેન્સર અવેરનેસ એન્ડ મેનોપોઝ સિરીઝ. અમે કોર્પોરેટ્સ, વિલેજીસ બધામાં જઈને બહેનોને સમજાવીએ છીએ, એ લોકોનું શીખવાડીએ છીએ હાઉ ટુ ડૂ ધ સેલ્ફ 1 મિનિટ ટેસ્ટ એટ હોમ. અમે બહુ બધું સ્કિલિંગમાં કરીએ છીએ. બહેનોને બેઝિકલી ઘરે બેસીને શીખવાડવાનું કે કેવી રીતે તમે વસ્તુઓ બનાવીને તમે વેચી શકો અને એમાં અમે લોકોને હેલ્પ કરીએ છીએ. कांटा लगा गाने से मशहूर हुई एक्ट्रेस और बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट शेफाली जरीवाला की दुखद मौत हो गई है, जिससे हर कोई शॉक है। रीमेक सॉन्ग कांटा लगा गाने से मशहूर हुई एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 जून की रात उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, जिससे उनकी मौत हो गई। अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। शेफाली जरीवाला के घर पर फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। वहीं अंबोली पुलिस स्टेशन में घर की मेड और कुक से पूछताछ की गई है। परिजन के भी बयान लिए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार शेफाली को बेहोशी की हालत में उनके पति और एक्टर पराग त्यागी के साथ 3 अन्य लोग शुक्रवार रात मुंबई के अंधेरी स्थित बेलेव्यू अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के रिसेप्शन स्टाफ ने पुष्टि की है कि शेफाली जरीवाला को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उनके परिवार के लोग, करीबी दोस्त और फिटनेस ट्रेनर भी पहुंचे हैं। ट्रेनर ने बताया कि शेफाली हमेशा अपनी सेहत को लेकर सीरियस रहती थी। वो सख्त डाइट फॉलो करती थी, रोजाना एक्सरसाइज करती थी। उन्होंने आगे बताया कि 2 दिन पहले ही शेफाली से मुलाकात हुई थी। शेफाली को मिर्गी की बीमारी थी, जिसे कंट्रोल में रखने के लिए वह ठंडी चीजें और ड्रिंक्स नहीं लेती थी। उन्होंने एक ऐसा रूटीन अपनाया था जिसे उन्हें दौरे ना आए। वीएनएम टीवी पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us.
sponsor a project through an annual CSR fund, support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats, connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, AC जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, CCTV जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. गुजरात की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के विसावदर विधायक गोपाल इटालिया ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल पर तीखा प्रहार करते हुए उमेश मकवाना के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। विसावदर विधानसभाની ચૂંટણીમાં જનતાએ CR પાટીલને શરમજનક રીતે અને ભૂંડી રીતે હરાવ્યા એ વાતથી એને ગુસ્સો આવ્યો છે અને CR પાટીલ ઉમેશ મકવાણાના ખભા ઉપર બંદૂક રાખી અને આ કાંડને કરાવી રહ્યા છે। મારી CR પાટીલની એક જ ચેલેન્જ છે, કેમ કે ગુજરાત આખામાં ધારાસભ્યો તોડવા ફોડવા ખરીદવાની દુકાન માત્ર ને માત્ર CR પાટીલ ચલાવે છે। એટલે ઉમેશ મકવાણા પણ જો હવે ભાજપમાં જવાનું અથવા આમ આદમી પાર્ટી સાથે જોડાયેલા રહી અને ભાજપનું કામ કરવાનું વિચારતા હોય તો એની પાછળનો દોરી સંચાર CR પાટીલના હાથમાં છે। CR પાટીલને ખુલ્લી ચેલેન્જ છે મારી કે આ બધા કૃત્ય કરવાના બદલે જો CR પાટીલમાં હિંમત હોય તો ધારાસભ્ય ઉમેશ મકવાણા પાસેથી એકવાર રાજીનામું અપાવી દે અને આવે બોટાદની ચૂંટણીમાં અમે જોઈએ છે કે CR પાટીલમાં કેટલો દમ છે। એટલે વિસાવદર વિધાનસભાની ચૂંટણીની ખીજ દાજ CR પાટીલ કોકના ખભે રાખીને ઉતારે છે, એવું કરવાના બદલે ધારાસભ્ય રાજીનામું આપી દે પછી અમે જોઈએ છે શું થાય છે। સુરતની જનતાએ આમ આદમી પાર્ટીને ભૂતકાળમાં બેઠી કરવાનું, ઊભી કરવાનું, સપોર્ટ આપવાનું કામ કર્યું છે। 2020ની મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં સુરતની જનતાએ આમ આદમી પાર્ટીને 27 સીટો આપી અને ગુજરાતની અંદર એક જગ્યા બનાવી દીધી હતી। અમે સુરતની જનતાના ઋણી છીએ। આજે જ્યારે સુરતમાં ખાડીપુર છે,
જનતા દુઃખી છે, પીડિત છે. જનતાને આગેવાનના સહયોગની જરૂર છે, સહકારની જરૂર છે. ત્યારે મેં નિર્ણય કર્યો છે, હું અને અમારી આખી ટીમ આવતીકાલે સુરત જઈશું અને ખાડીપુરથી પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં પીડિત લોકોની મુલાકાત કરી તંત્રનું ધ્યાન દોરવા માટે અને લોકોને સહયોગ આપવા માટેનું કામ કરીશું. આપ પાર્ટીનો અસ્ત થયો નથી એટલે ઉદય ફરીથી થવાનો પ્રશ્ન નથી. આપ પાર્ટીનો ઉદય 2020માં સુરત કોર્પોરેશનથી થઈ ચૂક્યો. એના પછી 5 ધારાસભ્યો આવ્યા, એના પછી બીજી ચૂંટણી, એના પછી ત્રીજી. ઉદય એક જ વાર હોય, 10 વખત ઉદય ન હોય. गुजरात के प्रसिद्ध शिव मंदिर सोमनाथ महादेव मंदिर के भक्तों के लिए खास व्यवस्था की गई है। श्रावण मास जैसे ही करीब आता है, देश भर के शिव भक्तों का ध्यान सौराष्ट्र स्थित सोमनाथ महादेव की ओर जाता है। लाखों भक्त दर्शन के लिए यहां आते हैं, लेकिन जो नहीं आ सकते उनके लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट ने एक बेहद भावनात्मक और सरल सेवा शुरू की है। सिर्फ 25 रुपए में बिल्व पूजन सेवा, वो भी घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण के जरिए। भक्तों की ओर से पंजीकृत बिल्व पत्र सीधे सोमनाथ महादेव को मंदिर के पुजारियों द्वारा अर्पित किए जाएंगे। खास बात यह है कि इस पूजन का प्रसाद रुद्राक्ष, भस्म और नमन भक्तों के रजिस्टर्ड पते पर डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। देशना यशस्वी प्रधानमंत्री श्री અને સોમનાથ ટ્રસ્ટના માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ સોમનાથમાં અનેક પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે છેલ્લા 2 વર્ષથી મહાશિવરાત્રિ તેમજ શ્રાવણ માસ દરમિયાન લોકો ઘરે બેઠા ભગવાન સોમનાથજીના પવિત્ર દિવસોએ બિલ્વ પૂજા કરી શકે અને એ લોકોને ઘરે બેઠા ભગવાનની નમન, ભસ્મ અને રુદ્રાક્ષનો પ્રસાદ મળી શકે એ માટે ખાસ આ પૂજા શરૂ કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને જનના સોમનાથ એટલે કે ઘરે ઘરે ભગવાન સોમનાથ પહોંચે, લોકો એમની પૂજા કરાવી શકે એ માટે ખાસ કરીને માત્ર 25 રૂપિયામાં બિલ્વ પૂજા ટ્રસ્ટ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે. અને અત્યાર સુધીમાં 7 લાખથી વધારે લોકોએ આ પૂજા કરવાનો લાભ લીધો છે. આજના દિવસે ટ્રસ્ટના માનનીય ટ્રસ્ટી શ્રી જે.ડી. પરમાર સાહેબના હસ્તે આ શ્રાવણ મહિનામાં લોકો બિલ્વ પૂજા નોંધાવી શકે એ માટે આજે આ પૂજા લોન્ચ કરવામાં આવી છે. गुजरात के भरूच जिले के आमोद कस्बे में दर्दनाक और शर्मनाक मामला सामने आया है। आमोद में एक गर्भवती महिला को समय रहते अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका और उसे हाईवे पर ही गड्ढों के बीच असहनीय पीड़ा के साथ बच्चे को जन्म देना पड़ा। ये घटना प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्ट निर्माण कार्यों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आमोद से मल्ला तलावड़ी से लेकर 32 नाला तक के हिस्से में सड़क की हालत बदतर है। भारी बारिश के बाद ये हाईवे छोटे बड़े तालाब जैसे नजर आ रहे हैं। कीचड़, गड्ढों और ट्रैफिक जैम ने इस हाईवे को मौत के रास्ते में तब्दील कर दिया है। આ રોડ ઉપરથી ડિલિવરી કરવા માટે જંબુસર લઈ જતા હતા, આ રસ્તા ઉપર જ ડિલિવરી થઈ ગઈ. ડોક્ટરની તો જરૂર પડી જ નથી, ડોક્ટરની જરૂર પડી જ નથી. આ તો બહુ સારું કહેવાય. આ વિકાસ એટલે વિકાસ કહેવાય. આ વિકાસ તો મેં કોઈ દિવસ જોયો જ નથી. વિકાસ તો આવો જ હોવો જોઈએ. આ રોડ આવો જ હોવો જોઈએ. આ રોડ ક્યારે બદલાશે કઈ ખબર નથી યાર. गुजरात के वडोदरा के दंतेश्वर में बारिश के चलते अंडरपास ब्रिज बंद किए जाने से हंगामा मच गया। वडोदरा के दंतेश्वर क्षेत्र में घाघरेटिया से सोमा तालाब की ओर जाने वाले रेलवे अंडरपास ब्रिज को पश्चिम रेलवे द्वारा अचानक बंद कर दिया गया। इस निर्णय से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि अंडरपास आसपास के हजारों राहगीरों के लिए एकमात्र रास्ता है। अचानक बिना पूर्व सूचना के रेलवे प्रशासन द्वारा रास्ता बंद कर देना उनकी रोजमर्रा की आवाजाही को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया। लोगों की मांग है या तो जल्द से जल्द रास्ता खोला जाए या वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अंडरपास में पानी भर जाने के कारण यह निर्णय लिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से अंडरपास को अस्थायी रूप से बंद किया गया है ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो।
दरअसल कई सालों से हर बार पानी की वजह से ये ब्रिज बंद कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी कॉरपोरेशन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। गुजरात के वडोदरा में जॉय ट्रेन से 4 साल की बच्ची की मौत मामले अब ट्रेन ड्राइवर पर केस दर्ज किया गया है। वडोदरा शहर के सयाजी बाग में घूमने आए परिवार की 4 वर्षीय मासूम बेटी की जॉय ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। अब इस मामले में जॉय ट्रेन के ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही के चलते आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि ट्रेन के ड्राइवर ने ना तो हॉर्न बजाया और ना ही किसी प्रकार की सतर्कता बरती, जिसकी वजह से बच्ची को ट्रेन आता दिखाई नहीं दिया। मृत बच्ची की मां की शिकायत पर सयाजीगंज पुलिस ने जॉय ट्रेन के ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। वीएनएम टीवी पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature फैंस, आपके काम की बात। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities.
For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री नदी में बसने वाले मगरमच्छ की मौत की खबर सामने आई है। वडोदरा शहर के बीचों बीच बहने वाली विश्वामित्री नदी मगरमच्छ के प्राकृतिक वास स्थल के रूप में पहचानी जाती है, लेकिन इस साल यहां मगरों की मौत के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। ताजा मामला कारेली बाग क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक 11 फुट लंबी मादा मगरमच्छ मृत अवस्था में पाई गई है। वन विभाग ने रेस्क्यू कर उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस साल अब तक 4 मगरमच्छ की मौत हो चुकी है, जो एक चिंता का विषय है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। मुस्लिम त्योहार मुहर्रम आने वाला है, जिसमें ताजिए स्थापित किए जाते हैं और 10 दिनों के बाद उनका विसर्जन किया जाता है। तांदलजा क्षेत्र के ताजिए हर वर्ष वडोदरा शहर के सरसिया तालाब में विसर्जित किए जाते हैं, लेकिन इस बार पुलिस द्वारा तांदलजा क्षेत्र में ही कृत्रिम तालाब बनाकर विसर्जन की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया था। इसके बाद आज कॉर्पोरेशन की टीम डंपर और हिताची मशीन के साथ पत्रकार LIG क्षेत्र के मैदान में कृत्रिम तालाब बनाने पहुंची। इसी दौरान स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध किया और कहा कि मैदान में कृत्रिम तालाब बनाना सही नहीं है। हमारा रेसिडेंट एरिया में तळाव खोदवानी વાત ચાલી રહી છે, એના માટે બધા અહીંયા જમા થયા છે ને અહીંયા આવા તળાવની કોઈ જરૂર નથી, કેમ કે ઓલરેડી તાંદલજામાં તળાવ છે। એવું હોય તો તમે ત્યાં જઈને એ સુધારો, ત્યાં બાજુ અમે તાજા ઠંડા કરીશું, ત્યાં બનાવી આપો। અહીંયા કોઈ જરૂર નથી, કેમ કે અહીંયા બધા બાળકો ને બધા રહે છે, એ અંદર હા રેસિડેન્ટ એરિયા છે ને અહીંયા બધા લોકો ફંક્શન પણ અટેન્ડ કરે છે। આની કોઈ જાતની કોઈ નોટિસ આપવામાં આવી નથી ને એકદમથી આવીને આજે ગાડીઓ ઊભી થઈ ગઈ છે, એટલે બધા જમા થઈને આનો વિરોધ કરવા આવ્યા છે। અહીંયા આજ રોજ સારા માટે ભેગા થયા છે કે અહીં તળાવ બનાવવાની કામગીરી હાથમાં લીધી છે કોર્પોરેશને, એ ગેરકાયદેસર છે, કારણ કે આ મેદાનની ઉપર નીચે વરસાદી ગટર પણ નાખેલી છે, પાણી તો ત્યાંથી જતું રહેવાનું છે, તો તળાવ ક્યાં બનવાનું છે? ને અમારે અહીં પત્રકાર સોસાયટીમાં આવી કોઈ તળાવની જરૂરિયાત છે નહીં। તાજા ડૂબાવા હશે તો અમે સરસા જઈશું અથવા તો ગામમાં બી તળાવ છે ત્યાં જઈશું। અને અહીં નાના નાના બાળકો છે, રેસિડેન્ટ એરિયા છે, કાલે કોઈ ડૂબી મરશે તો જવાબદારી કોની છે? એટલે આ સ્થગિત કરવા માટે મહેરબાની છે। VNM टीवी पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए VNM टीवी। होटल रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, मैनेज्ड बाय रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड, वडोदरा वासना भाईली रोड। रिजेंटा फेरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स, जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा।
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. गुजरात के मेहसाना में फिल्म कलाकारों ने अचानक थिएटर पहुंचकर दर्शकों को सरप्राइज कर दिया। गुजराती सिनेमा की बहुप्रशंसित फिल्म गोतीलो इन दिनों दर्शकों के बीच खूब पसंद की जा रही है। फिल्म के कलाकारों ने हाल ही में मेहसाना के वाइड एंगल सिनेमा में दर्शकों से अचानक मुलाकात कर सभी को चौंका दिया। ચંદુ એક સ્પેશિયલ કેરેક્ટર છે અને એ બધાને હેલ્પ કરે છે, દાદાજીના સાથે પ્લાન બનાવીને બધાને મોબાઈલ પરથી કાઢે છે, આખો પ્લોટ ચંદુ જ લખે છે, એટલે મને ચંદુ બહુ જ ગમે છે। બહુ જ સરસ એક નવો એક્સપિરિયન્સ હતો અને બહુ જ મજા આવી ગઈ। ડિફરન્ટ પીપલ મળ્યા, ડિફરન્ટ નવી વસ્તુ શીખ્યો, ફ્રેન્ડ્સ બનાવ્યા, એટલે બહુ મજા આવી ગઈ। નાનકડા પણ બહુ સરસ મજાના એવા હીરો માનવના મહેસાણામાં આવવાનો ખૂબ આનંદ છે। અને સીધી ફિલ્મની વાત કરું તો ગુજરાતીની સરસ પંક્તિઓ છે કે લઈ લો મોટર બંગલા મારા, લઈ લો વૈભવ મારો, પેન લખોટી ચાકના ટુકડા મુજને પાછા આપો, ક્યાં ખોવાયું બચપણ મારું મુજને શોધી આપો। મોબાઈલ સ્ક્રીનની પાછળ અત્યારે બચપણ ક્યાંક સંતાઈ ગયું છે, એ બચપણને ફરી એકવાર શોધી લેવાની સરસ મજાની વાત એટલે ગોતી લો। બસ તો તમે તમારું મધમીઠું બાળપણ બચપણ ગોતી લો અને ચોક્કસ જુઓ ગોતી લો। એટલે હું અહીંયા સાબરકાંઠાનો જ છું, એટલે એક તો ગામમાં આવવાની ફિલિંગ થાય અને અહીંયા આવવાનું બહુ પસંદ છે। અહીંયાના પેંડાએ મને બહુ પસંદ છે, માણસો પણ બહુ જ ગમે છે અને અહીંયા ઘણા બધા મિત્રો પણ છે અને માનવનું ગામ છે અને અહીંયા આજે ગોતીલોનો એક શો પણ રાખ્યો છે, એ નિમિત્તે અહીંયા આવ્યા છે। આજના જમાનામાં આપણે બધા જ વિજ્ઞાને બહુ પ્રગતિ કરી છે, કૂદકે ને ભૂસકે પ્રગતિ કરી છે, પણ પ્રગતિ કરતાં કરતાં ટેકનોલોજીએ આપણો ભોગ પણ લીધો છે, આપણા પોતાના સમયનો ભોગ લીધો છે, આપણા પોતાની ભાવનાઓને પણ આપણે સંભાળી શકતા નથી,
મન ચંચલ હોય જ છે, પણ આ ગેજેટોએ અને આ બધા જ ટેકનોલોજીએ આપણા મનને વધારે ચંચલ કરી દીધું છે. તો જ્યાં આપણને શાંતિ જોઈએ છે, પોતાના માણસો સાથે સંવાદ જોઈએ છે, પોતાના માણસો સાથે બેસીને જમીએ, લંચ કરીએ, ડિનર કરીએ, નાસ્તો કરીએ, ભલે રોજ કામના નિમિત્તે નહીં મળી શકતા હો, પણ જ્યારે આપણે જમતી વખતે પોતાના માણસો સાથે પોતે સમય ક્વોલિટી સમય આપીએ, પોતાના બાળકો સાથે સંવાદ કરીએ. હા કે એટલે પોતે પણ કામધામમાં ને પૈસા કમાવામાં વ્યસ્ત છે, ટેકનોલોજીમાં વ્યસ્ત છે, અને પોતાના માટે, પોતાના માણસો માટે આપણી પાસે સમય નથી. એ બધી જ વાત આમાં સમાવી લીધી છે. તો પોઈન્ટ ઇઝ ધેટ કે આપણે એનો પ્રમાણભાનમાં કેવી રીતે ઉપયોગ કરીએ. ટેકનોલોજીની ના નથી, ટેકનોલોજી દરેક માણસને જોઈએ છે, ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ પણ કરવો જોઈએ, પણ એનો એટલો ઉપયોગ ન કરીએ કે આપણે એનો शिकार बनी जाए, આપણે એનો આહાર બની જઈએ. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Instagram, Facebook के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर के चैनल नंबर 498 पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है. तो देखते रहिए VNM टीवी.